Hi guys, so we are back on UPSC Guide and it's time for the fourth lesson of Spectrum. Let me show you the book once again. This is the book, Spectrum. You have it, guys? Okay, yeah, hi. Okay, so people are there. So shall I start? Let me start with the introduction. We were doing the advent of European these powers and consolidation of British rule in India yesterday, and now we are on to this fourth chapter, that is India on the eve of British conquest. Okay, we'll be doing this fourth chapter where we'll talk about the Mughals, the late Mughals, and their ruling and everything. Okay, the fourth chapter. It is the fourth chapter. हम लोग फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, स्पेक्ट्रम का. सो टुडेज टॉपिक इज इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट. आज का टॉपिक है इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट. एंड वंस अगेन गाइज, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ गुड व्यूअर and supporting me. It was very nice. Okay, so let's start. Shall we start? Okay, thank you. तो कल हम लोग बात कर रहे थे अबाउट हाउ यूरोपियंस केम टू इंडिया. कल हम लोगों ने बात करी थी कि यूरोपियंस कैसे हमारे इंडिया में आए, कैसे उन्होंने अपना सेटअप लगाया, किस किस तरह से दे केम एंड दे फॉट amongst them and fought with the rulers also, and उन्होंने ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट करी. ट्रेडिंग कंपनी से they got फरमान्स and that is how they extended their empire. अब हम लोग बात करेंगे बिकॉज ब्रिटिश का आना इज नॉट जस्ट वन थिंग. देयर कमिंग इज नॉट जस्ट वन थिंग. देयर इज अनदर thing added to it, that how did they come, how could they enter India and how could they settle in India. Because ऐसे सिर्फ आके अपना सेटअप लगा देना इज नॉट पॉसिबल. इट इज बिकॉज ऑफ द रूलर्स दैट वी हैड, the Mughal rulers, and the struggles the Mughal rulers, the empire was facing. उनकी वजह से the weak ruling of Mughals gave rise to the Europeans. Okay, so that we know. हाँ, मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश में बोलूंगी, डोंट वरी गाइस. तो इसका लास्ट में यही आता है कि हमारे यहाँ इंडिया में ऑलरेडी जो लोग रूल कर रहे थे उनकी कुछ ना कुछ कमी रही होंगी, कुछ ना कुछ उनके ड्रॉबैक्स रहे होंगे उनके डिक्लाइन के लिए, जिसकी वजह से न्यू रूलिंग पार्टी हमारे इंडिया में आ पाई, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में नए रूल सेटअप हो पाए ना. बिकॉज ऑफ देम द यूरोपियंस वर एबल टू सेट अप देयर ट्रेड एंड देन देयर एम्पायर. तो कल हम लोगों ने इस बारे में पढ़ लिया. नाउ वील टॉक अबाउट द डाउनफॉल ऑफ मुगल्स. द फर्स्ट थिंग इज डाउनफॉल ऑफ मुगल्स. सो गाइज, डू यू नो कि ये जो डाउनफॉल ऑफ मुगल्स था, कैसे मुगल्स धीरे धीरे डिक्लाइन होते गए, कैसे वो एम्पायर नीचे जाता गया, बिकॉज ऑफ मतलब फ्रॉम वेयर, कब से. बिकॉज अर्लियर तो मुगल्स वर वेरी वेरी स्ट्रांग, दे हैड सो मच पावर इन देयर हैंड्स, बट हाउ डिड दिस कम टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स. या तो डाउनफॉल ऑफ मुगल स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब. ओके, इट स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ या ओके, आवाज सही नहीं आ रही है. आई थिंक, आई होप द कनेक्शन इज ऑल राइट. Okay guys, I think the connection is all right. Am I audible? Can you hear me?
Okay, so this downfall of Mughals started with the reign of औरंगजेब. औरंगजेब जब था उसी टाइम पे ये चीजें स्टार्ट हो गई थी. नाउ व्हाट हैपेंड इज, अब हम लोग को देखना है कि उस टाइम पे जब ये डाउनफॉल हो रहा था, उस टाइम पे कई सारी चीजें हुई. देयर केम दिस इंडिपेंडेंट स्टेट सेटअप होने लग गई. इंडिपेंडेंट स्टेट कौन कौन सी, जो कि हैदराबाद, लाइक अवध, बंगाल एंड पंजाब, इस तरीके से इंडिपेंडेंट स्टेट सेटअप होने लग गई. मुगल रूल स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. वो अपने इतने बड़े एम्पायर से वो छोटा होता जा रहा था, बिकॉज इट वॉज गेटिंग डिवाइडेड डे बाय डे. हर रोज कुछ ना कुछ बैटल्स होते थे, कुछ ना कुछ रीजंस बन जाते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस या फिर किसी भी तरीके के सोशियो इकोनॉमिक रीजंस ऐसे बनते जा रहे थे, जिसकी वजह से मुगल रूल वॉज कमिंग टू एंड ना. देयर पावर वॉज गोइंग डाउन. वो लोग हर रोज जो उनकी पॉलिसीज थी, दे वर नॉट वर्किंग, पॉलिसीज नहीं काम कर रही थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी, जिसकी वजह से दिस मुगल रूल वॉज कमिंग डाउन. Now, now shall we know that what were the challenges to the Mughal rulers? What were the challenges to the Mughal Empire? We'll talk about the challenges to the Mughal Empire. So there was a absence of internal strength. मतलब internally जो rulers थे, the rulers were very getting weaker day by day. They were not able to strengthen their power. They were not able to strengthen their internal power. Internally चीजें खराब हो रही थी, and because of this internal dissatisfaction, that internal strength के decline की वजह से it affected the whole empire. The second reason, the first reason we read is absence of internal strength. The second reason that is here is the rise of external challenges. External challenges में हम अभी आगे पढ़ेंगे कि क्या external challenges आए थे. External challenges में था कि नादिर शाह, as you know, the Persian Empire का जो रूलर था, he came and plundered Delhi and plundered India. ना वो यहाँ पर आया, उसके बाद he fought battles and he won. और उसको इधर से उतनी ज्यादा उसको रोका नहीं गया. Nobody stopped them from coming. Nobody stopped Nadir Shah, the Persian ruler, from coming and from looting India. Now, as we know, ये चीज important है. Nadir Shah was the one who plundered Delhi and plundered India badly, and he took away the Peacock throne and the Kohinoor diamond. He took away the Peacock throne and the Kohinoor diamond. ओके, सो उसने नादिर शाह यहाँ पर आया एट जो जब वो आया यहाँ पे आके उसने उसको एक तरीके से ये भी इसमें लिखा, हिस्ट्री ये भी कहती है कि व्हेन नादिर शाह के उसे किसी भी तरीके से रोका नहीं गया था. नोबडी वाज एबल टू स्टॉप हिम बिकॉज वी डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ आर्मी, और मे बी वी डिडंट हैव, द मुगल्स डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ पावर, दैट इंटरनल स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से नादिर शाह वॉज नॉट स्टॉप्ड एंड ही केम टू इंडिया. ही लूटेड इंडिया एंड ही टुक अवे द पीकॉक थ्रोन एंड द कोहिनूर डायमंड. नाउ the next thing was, उसके बाद नादिर शाह had this successor. Nadir Shah had his successor. What was the name of the successor? Ahmad Shah Abdali. Ahmad Shah Abdali came to India and then he plundered more and more. वो और आगे बढ़ता चला गया, and he was, the thing is कि how could he come so easily? वो इतने easily यहाँ पर आके कैसे इंडिया को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे थे? बिकॉज जो नोबल्स थे, जैसे कि एक ये रोहिला चीफ था, दिस Ahmad Shah Abdali was supported by Rohilla chief, that Mir Baksh, Najib-ud-Dौला, इसको इन्होंने, नजीब-उद-दौला ने अहमद शाह अब्दाली को काफी सपोर्ट किया, एंड ही वाज सपोर्टिंग इंटरनली. वो सीक्रेटली उनको सपोर्ट कर रहा था टू कम टू इंडिया एंड टू प्लंडर अस. Okay, now he was attacked from Nadir Shah, he was attacked by Ahmad Shah Abdali, and then what happened? There were several battles that were fought. And because of these battles, in battles की वजह से, Battle of Panipat, that was third Battle of Panipat, where the Abdali defeated Marathas. Ahmad Shah Abdali, who came from outside, defeated मराठास. पानीपत में लड़ाई हुई थी. पानीपत काफी फेमस रहा है लड़ाई के लिए बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर. पानीपत वॉज लाइक अ सेंटर ऑफ इंडिया. वहां पे वॉर्स इसलिए होते थे बिकॉज इट वॉज नियर दिल्ली एंड एवरीबडी वॉज अट्रैक्टेड टू दिल्ली. लाइक एवरी रूलर, ईच किंगडम wanted
to be in Delhi because they wanted to rule the whole of India from the center. इसलिए Panipat became a very good site for the battles to happen, and Panipat wars happened. There were too many. There were 3 to 4. There were 3 battles that were fought in Panipat, and this was the third battle in 1761 in which Ahmad Shah Abdali, who came from outside, defeated the Marathas. Okay, now we will talk about the late Mughals. That is very very important. That who were the late Mughals? Late Mughals वो लोगों को कहते हैं जो मुगल एम्पायर के एंड में आते आते तक आने लग गए थे. The people, the rulers, the empire, the emperors who were coming after the decline, after औरंगजेब. जो औरंगजेब के बाद वाले rulers हैं, they are known as the late Mughals. Okay, the first one we are talking about. Okay, English, Hindi. मैं Hindi, English, we are using both. So these were the challenges to the Mughal rulers. What were the challenges to the Mughal rulers? सबसे पहली बात कि जो internal strength का absence था, the absence of now there was an absence of internal strength, and there was a rise of external challenges, and then it was attacked by Nadir Shah, then it was attacked by Ahmad Shah Abdali, and then happened Battle of Panipat. ये सब reasons बनते गए for the decline of Mughals. Now वीक रूलर्स कौन थे मुगल एम्पायर के? नंबर 1, बहादुर शाह 1, who ruled from 1709 to 1712, and he was also known as Shah-e-Bekhabar by Khafi Khan. He was also known as Shah-e-Bekhabar from Khafi Khan. He had this pacified policy towards the Marathas and the Rajputs and the Jats. ठीक है, he had this pacified policy. ये question आता है that why who had this pacified policy towards the Marathas, Rajputs and Jats? Then it is Bahadur Shah I, who ruled from 1709 to 1712, and he was also known as Shah-e-Bekhabar from Khafi Khan. And but because Sikh जो हमारे बंदा बहादुर थे, he was trying to come into conflict with this Bahadur Shah I, so he took action against him. Okay, the next one was Jahandar Shah, that is 1712 से 1713. Okay, Jahandar Shah was the second one after Bahadur Shah I, and he was from 1712 to 1713, and Jahandar Shah came into power by the help of Zulfikar Khan. Zulfikar Khan की help से Jahandar Shah came into power, and this ruler Jahandar Shah abolished jizya. What is jizya? It was tax on non-Muslim activities. Jizya was a tax on non-Muslim activities, and this ruler, this Zulfikar Khan, was a noble to him, and then this introduced Ijara system. That is, Ijara system is revenue farming. That is, the revenue farming means कि highest bidder को उसका मिल जाता था. Like highest bidder got this farming का responsibility, and this was known as Ijara farming. Ijara farming is revenue farming. Jahandar Shah abolished jizya. He introduced Ijara system. Okay. Then the third was Farooq Siyar. He ruled from 1713 to 1719, and then he came up with the help of Sayyid brothers. Sayyid brothers were also known as the kingmakers, and kingmakers कौन थे? It was Abdullah Khan and Hussain Ali. ठीक है, there were 2 kingmakers, that was Abdullah Khan and Hussain Ali. Okay, Farooq Siyar came into power with the help of Sayyid brothers, and Jahandar Shah came into power with the help of Zulfikar Khan. Now, this Farooq Siyar also, as we know, as we have discussed before, कि Europeans को, English को, he granted a farman. He gave this farman to the British in 1717 to just go for this trade and everything. Religious tolerance इसने अपनाई थी,
he abolished jizya too and the pilgrimage tax. He abolished the pilgrimage tax and abolished jizya. Okay, then the fourth ruler was Rafiud Darjat. He was the shortest time ruling. He had the shortest time ruling. Rafiud Darjat had his shortest time ruling, and then came Rafiud Daulah. That is, Rafiud Daulah was also known as Shah Jahan too, and he was an opium addict as given in Spectrum. These two rulers, Rafiud Darjat and Rafiud Daulah, had shortest span time of their ruling, and they were placed by Sayyid brothers. They were placed by Sayyid brothers. Rafiud Darjat and Rafiud Daulah were placed by Sayyid brothers. And then came Muhammad Shah. Muhammad Shah ने काफी अच्छी ruling करी थी. He ruled for like 29 years. It was from 1719 to 1748. And Muhammad Shah was also known as Rangila. He killed the Sayyid brothers with the help of Nizamul Mulk. He killed the Sayyid brothers. Why? Because ये जो nobles थे, Sayyid brothers, they were coming into power. They were the reason behind these ruling emperors. So because they were the reason behind the ruling emperors, so they were coming into power. They were taking all the advantages of being the nobles, and so Muhammad Shah had them killed, these two Sayyid brothers, with the help of Nizamul Mulk. Okay. This Nizamul Mulk, Nizam also found Hyderabad in 1724. He also found Hyderabad in 1724. And Muhammad Shah के अंडर एक और चीज हुई थी, that was Battle of Karnal, where Nadir defeated him. Okay? Nadir Shah defeated, Nadir Shah जो Persian ruler आया था, he defeated Muhammad Shah. Okay? Then the seventh ruler who came was Ahmad Shah. Ahmad Shah ruled from 1748 to 1752. Ahmad Shah ने 1748 से 1754 तक रूल करा था, and he was all into Udambai. Udambai को उन्होंने पूरे स्टेट के अफेयर्स दे रखे थे. He didn't take any responsibility. He was not responsible for anything during his reign. He was altogether he was altogether dependent on Udambai. Okay, that she was also known as Queen Mother and Kilba-e-Alam. Okay. Then the eighth one who came was Alamgir II from 1754 to 1758, and इसके सामने, as he ruled from 1754 to 1758, Alamgir II के सामने Battle of Plassey भी हुआ था 1757 में. Battle of Plassey आप आगे पढ़ेंगे जिस भी चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में, आई थिंक 5th चैप्टर में यू विल लर्न अबाउट बैटल ऑफ प्लासी. एंड अहमद शाह अब्दाली भी इसी के टाइम पे आया था, आलमगीर 2 के टाइम पे. ओके, द नाइन्थ रूलर वॉज शाहजहां 3. The ninth ruler was Shah Jahan III from 1758 to 1759. इसमें कुछ खास नहीं हुआ था, इनके रेन के टाइम पे कुछ खास नहीं हुआ. अब हम इसके बारे में आ रहे हैं. शाह आलम 2 1759 से 1806. बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764 में. तो दिस हैपेंड इन फ्रंट ऑफ हिम. शाह आलम 2 ही केम to see this battle of Buxar and Treaty of Allahabad, जिसके थ्रू Treaty of Allahabad we all know, जिसके थ्रू दीवानी राइट्स दे दिए गए थे ब्रिटिशर्स को ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. Treaty of Allahabad के थ्रू this happened in the reign of Shah Alam II. Okay, Shah Alam II was the first ruler to be a pensioner of the Britisher. ठीक है, he was the first ruler to be a pensioner to the Britishers. And so now, are you guys getting? Wait, let me turn on the comments. I can just see for some time. Then I'll switch it off. Because you guys comment uselessly, like useless comments. Will you guys stop saying hi, hello, and just listen? If you want to say hi, hello, and everything, you can just go and sit. At least listen. Okay, so you got it, guys. Now, I'll just tell the names once again. एक बार उसका पूरा फिर से एक बार बता देते हैं कौन पहले आया. क्रोनोलॉजी में बताते हैं. The weak rulers were, यहां से स्टार्ट हुए. वीक रूलर्स यहां से स्टार्ट हुए बहादुर शाह 1 से. देन केम जहांदर शाह. देन केम फारूक सियार.
फारूक सियार के बाद नेक्स्ट जो आया थे वो दो थे, वो बहुत शॉर्ट पीरियड के टाइम पे आए थे, रफीउद दर्जात एंड रफीउद दौला। एंड देन केम मोहम्मद शाह, जिसने काफी अच्छे से रूल करा, एंड ही केम टू बी नोन एज रंगीला। उन्होंने काफी बैटल ऑफ करनाल भी देखा था। ही हैड दिस निजाम जिसने हैदराबाद फाइंड करा इन्हीं के मोहम्मद शाह के टाइम पे। हाउ टू रिमेम्बर द सीक्वेंस? यू हैव टू रीड इट, then you will remember the sequence. You don't have to learn everything. It's not about learning. You don't have to ratify the things. You just need to know. Yeah, I'll tell about the treaty again. Now, then came Muhammad Shah, then came Ahmad Shah, उसके बाद आलमगीर टू, आलमगीर टू के बाद शाहजहां थ्री, शाहजहां थ्री इज ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंस बिकॉज नथिंग हैपेंड, एंड देन शाह आलम टू। शाह आलम टू के पास बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर happened in 1764। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था, और 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ उसके बाद एक ट्रिटी साइन हुई थी। according to this treaty of Allahabad, the Diwani rights of Bengal, Bihar and Orissa were given to the British. Okay, the topic is India on the eve of British conquest. ओके, नाउ शाह आलम टू फर्स्ट ऐसा रूलर था जो ब्रिटिश पेंशन पे रहना स्टार्ट करा था। ओके, उसके बाद और भी कुछ रूलर्स आए जो थे अकबर टू। अकबर टू रूल्ड फ्रॉम 1806 to 37, एंड राजा राम मोहन रॉय, जिनको हम जानते हैं, राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल इन्होंने दिया था, अकबर टू ने दिया था। Okay, and then Bahadur Shah too came. The things you are asking, guys, this will be discussed later in the chapters. I hope you have at least read the book once. Okay, then came, now last ruler was Bahadur Shah II. Bahadur Shah II is also of very much importance because he participated in revolt of 1857, and revolt of 1857 क्या था? बहादुर शाह टू ने पार्टिसिपेट किया था इन रिवोल्ट ऑफ 1857, और ये हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। ओके, देन he was sent to Rangoon। जब ये सब चीजें हुई, रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, तो what happened? He was sent to Rangoon where he died, and this was the end of Mughal Empire. This was the end of Mughal Empire. The book I am referring is a Spectrum. I don't remember things. If you are saying I remember things, I don't remember things. I have these notes. I make my notes, and that's how I tell you. Okay, so nobody can remember this much. Then what are the causes of decline of Mughal Empire? The book is a Spectrum. Watch this, guys, or watch this video, guys, on YouTube, and then you can know the book, name of the book again and again. It's Spectrum. You guys keep asking the book's name again and again and again. You have been following these like the lectures. You should know the book at least. Okay, the book is a Spectrum. Once again, and the last time. Now, अब हम लोगों ने पढ़ लिया कि कौन कौन वीक रूलर्स आए थे, दीज मुगल रूलर्स। ओके, लास्ट रूलर हमारा था बहादुर शाह टू। Okay, now we come to the causes. What were the causes of decline? Now see, guys, emperor के नीचे ना दो लोग होते थे. There were two people like under the emperor, two important people, that were the nobles and the zamindars. zamindars के पास सारे revenue से related और जितने military administration से related जो work था, that was given to this zamindars. And zamindars had, these questions are asked. Turning off the comments. Okay, as you people were saying, turn off the comments, so I turned off the comments. I'll come back to the comments after we are done this one thing, and then we'll see if you are understanding. आप लोग को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप उस टाइम पे कमेंट कर दीजिएगा, तब मुझे पता चल जाएगा. So what were the causes behind the decline of Mughals?
ये मुगल जो डिक्लाइन हुआ था, व्हाट वर द मेन कॉजेस, इसके पीछे मेन रीजंस क्या थे जिन्होंने मुगल्स का डिक्लाइन में बैक करा था, जिसने हेल्प करा था. सो द एम्परर हैड टू पीपल, द नोबल्स and the zamindars. Zamindars had these hereditary owners. They were known as the hereditary owners and they had the power of revenues. Okay, और nobles का काफी काफी important role play होता था in the Mughal empire. Okay, so these nobles were getting unfaithful. They were not faithful to the ruler. They were not faithful to the ruler. The nobles were not faithful to the rulers, and the zamindars, they were having this extreme power. So because of this extreme power, these together were making the empire very very weak. वो लोग एम्पायर के फंड्स को यूज कर रहे थे टू गेन देयर सुप्रीमेसी. नोबल्स एंड द जमींदार्स, ये जो नोबल्स और जमींदार्स थे, दे वर ट्राइंग टू गेट सुप्रीमेसी. वो लोग अपने लिए सुप्रीमेसी की जो पार होती है वो अपने ऊपर लाने की कोशिश कर रहे थे, एंड दे वर यूजिंग द फंड्स ऑफ मुगल एम्पायर. तो कहीं ना कहीं दिस वाज अ वेरी बैड ड्रॉबैक फॉर द मुगल एम्पायर. देन द सेकेंड थिंग वाज जागीरदारी क्राइसिस. जागीरदारी क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही मेन चीज है बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. Behind the decline of Mughal Empire, Jagirdari crisis has been a very important factor. Apart from the nobles and the zamindars, Jagirdari crisis was the second reason, second cause behind the decline of Mughal Empire. So, then there was an absence of central leadership. There was an absence of central leadership. ये जो जागीरदारी crisis था, it was a kind of the large amounts of jagirs and mansabs assign करे जाते थे. They were assigned, high mansabs and jagirs were assigned to the nobles, and इसकी वजह से they were draining out all their money and power. They were draining out, the Mughal emperors were draining out their power and money to nobles. Okay, इसकी वजह से उनके पास फंड्स कम पड़ रहे थे, उनके पास चीजें कम हो रही थी. So you can read this in book, the Jagirdari crisis. You can also read in the book. And then we come to the absence of central leadership. Central leadership के बारे में अभी हमने पढ़ा. We read about central leadership, that the internal strength of Mughal emperors was going down. Now, the internal strength of Mughal emperors was going down. Emperor अपने आप से कोई भी चीज नहीं कर रहा था. The power was distributed among a lot of people. जो power थी वो अलग अलग लोगों में distributed थी. It was distributed with the nobles and the zamindars, and that is why it was leading to a decline in the central leadership. There was an absence in central leadership. जो एक कंसोलिडेटेड एक पावर होती है एक रूलर के पास, वो हट रही थी और वो बट के अलग अलग लोगों में जा रही थी. वो नोबल्स के पास जा रही थी, वो जमींदार्स के पास जा रही थी. ठीक है, और इन्हीं रीजंस की वजह से, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, बिकॉज ऑफ नोबल्स गेटिंग too much power, because of the zamindars getting too much power, nobles और zamindars के पास काफी power आ रही थी. and because of this, the rise of regional aspirations, हर कोई अपने region के हिसाब से, everybody according to their regional disparities was growing with a न्यू एम्पायर. दे वर ग्रोइंग विद अ न्यू एम्पायर. हमेशा जो भी हर रीजन में हर कोई एक न्यू एम्पायर के साथ आ रहा था, एंड दैट वाज अ वेरी मेजर कॉज behind the decline of Mughal Empire. And there were too many other things. That was economic and administrative problems. There were economic and administrative problems. That there was a shortage of funds. Shortage of funds क्यों नहीं होगी? इतने सारे battles हो रहे थे. There were going so many battles. They were fighting so much. So when we are fighting, there is a loss of money. There is a loss of funds that is going. कभी भी कोई लड़ाई होती है उसमें बहुत funds. There is a use of machinery. There is use of people. लोग यूज होते हैं, मैन मशीनरी सब यूज होता है, पैसा यूज होता है. तो देयर वॉज अ लॉस ऑफ फंड्स. ठीक है, उसकी वजह से दिस वॉज डिक्लाइनिंग. देन जो लग्जरियस लाइफस्टाइल की आदत पड़ गई थी, देयर वॉज वन थिंग कि द रूलर्स एंड द नोबल्स हैड दिस थिंग ऑफ हैविंग अ लग्जरियस लाइफस्टाइल. बिकॉज दे वर द रूलर्स, दे गॉट मनी, और वो
लोगों की, जनता की फिक्र ना करके, अपनी जो उनकी जो पूरा एम्पायर था उसकी फिक्र ना करके, दे हैड दिस थिंग ऑफ enjoying their power and enjoying their lifestyle. ठीक है, there was this luxurious lifestyle of emperors that was leading to the decline of Mughal empire. Okay, then expenditure was more than income. That is so, मतलब यू ऑलवेज नो दिस, जब इतनी सारा पैसा बाहर जा रहा है और हमारे पास वापस नहीं आ पा रहा है, क्योंकि बाहर जो पैसा जा रहा है, द मनी दैट इज गोइंग आउट, द फंड्स दैट आर गोइंग आउट आर नॉट बीइंग यूज्ड इन एग्रीकल्चर और समथिंग, दे आर यूज्ड इन द वॉर्स, दे आर द थिंग्स आर गेटिंग प्लंडर्ड, द इंडिया, द country is getting looted, so the money is only going out with no investment. It is not an investment to be looted and to create wars. ठीक है, to fight wars, it is of no use. उससे सिर्फ फंड्स बाहर जाते हैं, पार बाहर जाती है, ना कि अंदर आ रही थी. So expenditure was more than income. Then comes, there was a reduction in the Khalisa lands. Okay, these are the main causes. Causes हमें याद रखने चाहिए. Causes के पीछे अब क्या क्या causes थे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. We shall revise the causes again behind the decline of Mughal Empire. Behind the decline of Mughal Empire, these are the causes. ये causes हैं, उनके मैं फिर से एक बार लगातार नाम लूंगी. Number one thing, the rise of nobles and zamindars. ठीक है, द नोबल्स एंड जमींदार्स वर गेटिंग वेरी मच इन पावर. नोबल्स और जमींदार्स काफी ज्यादा पावर में आ रहे थे. नोबल्स और जमींदार्स काफी ज्यादा पावर में आ रहे थे. दे वर गेटिंग अनफेथफुल, दे वर नॉट फेथफुल टू द एम्परर. वो किसी भी तरीके से एक अच्छे नोबल्स और जमींदार्स का फर्ज नहीं निभा रहे थे. दे वर ऑल unfaithful. Then comes the जागीरदारी crisis. Then comes the जागीरदारी crisis. ठीक है, lots of jagirs and mansabs were assigned to lot of people, the nobles, and this was known as the Jagirdari crisis. The third thing was rise in the regional aspirations. Regional aspirations की बात करी जाए तो rise in regional aspiration means कि हर रीजन में न्यू एम्पायर सेटअप हो रहा था. एवरीबडी वांटेड टू बी द किंग, नोबडी वांटेड टू बी अ नोबल. कोई नोबल या जमींदार किसी के नीचे नहीं रहना चाह रहा था. एवरीबडी वांटेड टू हैव देयर ओन एम्पायर, अपना खुद का एम्पायर सेटअप करने की कोशिश कर रहे थे. सो दिस वॉज अ वेरी बिग रीजन. एंड देन द इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स. इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स क्या थी? दिस वॉज एक्सपेंडिचर वॉज मोर देन इनकम. बाहर पैसा जो जा रहा था वो ज्यादा था और इनकम कुछ नहीं हो रही थी. एंड नंबर ऑफ आर्मीज वर राइजिंग. देन देयर वर लॉट्स ऑफ वॉर्स, काफी सारे बैटल्स एंड वॉर्स लड़े जा रहे थे, जिससे कि पैसा बहुत खर्च हो रहा था. Emperors had this thing of having a luxurious lifestyle. They always wanted a luxurious lifestyle. So इससे कहीं ना कहीं it was affecting badly. Okay. Then there was reduction in Khalisa lands. These are the main causes. Okay. अब ये जो हमने पढ़ा कि there were a lot of regional aspirations coming up. What do we mean by regional aspirations? What kind of regional aspirations were coming up? As we know, the regional aspirations means that lots of people wanted to set up their own empire. The nobles were unfaithful. The nobles wanted the power of an emperor. Okay. So are you guys getting? Wait a sec. Let me turn on commenting for some time and just listen. Got it, guys? Okay. तो अभी तक हमने इस बारे में पढ़ लिया. पहले हमने पढ़ा कि मुगल एम्परर्स कौन थे, लेट मुगल्स कौन थे, उनके नाम क्या थे, उनके अंडर अंडर क्या क्या मेन चीजें हुई, व्हाट ऑल हैपेंड अंडर दीज लेट एम्परर्स. ये अभी हमने पढ़ लिया. ओके. देन व्हाट वर द कॉजेस. देन वी रेड अबाउट व्हाट वर द कॉजेस. उसके पीछे कॉजेस क्या थे डिक्लाइन के पीछे. अब हम आते हैं, जो हमने अभी कॉजेस में एक चीज पढ़ी, we got to know about the regional aspirations. We got to know about the regional aspirations, and these regional aspirations was that the regional states were coming up. Okay, so the regional states were coming up. Thank you guys.
So these you are asking जागीरदारी क्राइसिस ना, तो जागीरदारी सिस्टम वाज बेसिकली कि नोबल्स को ना कुछ हाई मनसब्स और हाई जागीर्स असाइन होते थे. दीज हाई जागीर्स एंड मनसब, अब वो जब असाइन आप कर रहे हो, आप खुद सोचो, यू ओनली थिंक इनकम इज निल, इनकम इज नॉट कमिंग, बट यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑन ऑल दीज थिंग्स, एंड दे आर मतलब दे आर यूज टू getting high mansabs and jagirs. They are used to that power, they are used to that money. तो कहीं ना कहीं this will act negatively, no? Okay, thank you guys. Now, अब हमने पढ़ा था रीजनल एस्पिरेशंस के बारे में. आगे बढ़ते हैं, और एल्स द टाइम विल बी लाइक 1 hour 2 hour if I keep reading each and every comment and telling you. So the regional states that were coming up, regional states were three kinds of states. I'm again turning off so that you can listen. Good. Now you guys just listen, okay? Comment a lot. You guys comment a lot. God, I never commented on anybody's video like that. So there were three kinds of regional states. There were successor states. ठीक है, सक्सेसर स्टेट्स क्या थी? दे ब्रोक अवे फ्रॉम द एम्पायर. सक्सेसर स्टेट्स क्या थी? दैट ब्रोक अवे फ्रॉम द एम्पायर, जो कि मुगल एम्पायर से ही निकल के आई थी. दीज वर द सक्सेसर स्टेट्स. देन द सेकेंड केम द इंडिपेंडेंट किंगडम्स. इंडिपेंडेंट किंगडम्स क्या थे? जो कि जैसे कि आप सपोज the Mughal Empire is not stable. It was not stable, and because of this destability, this destabilization, what happened? There came the independent states. कई independent states, कई अपने आप को, अगर कोई region है वहां पे लोग अपने आप को ruler बताने लग रहे थे, जो कि छोटी पार में थे, but they were coming up as rulers. Okay. So these were the independent kingdoms. छोटे छोटे kingdoms आने लग गए. And the third was the new states. New states कैसी थी? जो rebel states आ रही थी, like जो नए नए सेटअप हो रहे थे. The new caste and creeds were coming up, and these were the new states. So there are three kinds of states that came up from this regional aspirations. 3 तरीके की स्टेट्स आई थी रीजनल एस्पिरेशन से, जो कि बहुत बड़ा कॉज था डिक्लाइन का मुगल एम्पायर में. द 3 स्टेट्स वर सक्सेसर स्टेट्स, न्यू किंगडम्स, इंडिपेंडेंट किंगडम्स, एंड द रेबल स्टेट्स दैट वर द न्यू स्टेट्स. ओके, ओके गाइज, हमने ये चीज पढ़ ली है कि कौन रूलर्स थे, लेट मुगल्स कौन थे, who were the late Mughals, what all happened under these late Mughals. The second thing we read was what was the cause behind the decline of Mughal Empire, उनके पीछे causes क्या थे. फिर उससे हमने चीज निकाली that new states were coming up. Now what were the 3 kinds of states that were coming up? Okay, उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया. अब हम आते हैं what were these states, उन states के नाम. क्वेश्चंस हमेशा ऐसे ही आते हैं, व्हाट वाज द स्टेट, हु डिड दिस, और किसने करा था, कौन सी स्टेट कौन लाया था. ठीक है, द नेम ऑफ द पर्सन एंड द नेम ऑफ द स्टेट यू शुड नो. सो आई एम टेलिंग यू, जस्ट लिसन. ओके, हैदराबाद was set up independently, not independently, it was set up as a successor state. Hyderabad was set up as a successor state by Nizamul Mulk Asaf Jah. Hyderabad Nizamul Mulk Asaf Jah ने लाया था. He was also Chin Kilj Khan, जिसके बारे में हम जानते हैं, Chin Kilj Khan. He was Nizamul Mulk Asaf Jah. He brought this Hyderabad state. The second state was of Awadh. The Awadh state came with the help of Sadat Khan, Barhanul Mulk. Okay, Sadat Khan, Barhanul Mulk, which state? Awadh. Then the third one was Bengal. That was through Murshid Quli Khan. Murshid Quli Khan came up with Bengal. ये 3 states बहुत important हैं. These 3 states are very very important. And the Hyderabad, that is Chin Kilj Khan, Nizamul Mulk Asaf Jah, then Sadat Khan, Barhanul Mulk came up with Awadh, and then Murshid Quli Khan came up with
Bengal. Now, the Rajputs came under Jai Singh. Jai Singh also got this city, this beautiful city that we know as the Pink City. Kisne built kari thi? It was built by Jai Singh. Okay, the Rajputs were coming up. And then the fifth one was Mysore. Mysore setup हो रहा था with in the junction of eastern and western घाट्स. इसके जंक्शन पे Mysore state बहुत फेमस हो रहा था, जो कि आगे इसका काफी रोल है Mysore state का. You will read about Tipu Sultan and everything. एंग्लो माइसोर वॉर्स के बारे में भी आप पढ़ेंगे. यू विल रीड अबाउट एंग्लो माइसोर वॉर्स. तो वेयर इट ऑल स्टार्टेड? इट स्टार्टेड विद Mysore. Mysore was set up by Hyder Ali. Okay. Mysore was set up by Hyder Ali, and then Hyder Ali के बेटे का नाम था टीपू सुल्तान. ओके. Then एक और स्टेट थी, that was Kerala. It was done by Martanda Verma, and he tried to do this Kerala thing with a Western model of army, with Western thoughts. He came up with Kerala. आज भी we all know Kerala is very much Western in their thoughts and their not lifestyle, but maybe with lifestyle also, we can't say about lifestyle, but with its thoughts, it is very developed state. And so Kerala का जो starting हुई थी वो ऐसे ही हुई थी with a western model. Okay. Then came the Jats. Jats कहाँ पे आ रहे थे? Jats arise हो रहे थे. Jats were arising from these lower castes. They were coming up as Jats, and these Jats were coming around Delhi, Mathura and Agra. Mathura, Agra and Delhi के around एक region था जहाँ पे Jats were coming up. And who was the main person behind it? It was Churaman and Badan Singh. They set up, Churaman and Badan Singh, these Jat leaders, they set up the city of Bharatpur. They set up the city of Bharatpur. Then the eighth comes as Sikh. Now this Punjab kingdom was being set up mainly, it was set up mainly by Ranjit Singh. This Sikh region of Punjab kingdom, ये किसके अंडर आ रहा था? It was coming up under Ranjit Singh. Okay. Then the Marathas, ये जो मुगल अथॉरिटी को अपरूट किया था, मुगल अथॉरिटी को निकाला था, उनके रूट्स को हटा के, उनसे लड़ के, उनसे बैटल्स फाइट करके, by fighting battles with the Mughals, these Peshwas were getting Mughal authority out of the place and entering everywhere. And so the Maratha kingdom was basically set up by the Peshwas. It was being promoted by the Peshwas mainly. There were many, but the major role was of Peshwas. You can also read this in the book. And then comes the रोहिलखंड एंड फर्रुखाबाद. रोहिलखंड और फर्रुखाबाद, ये रोहिलखंड और फर्रुखाबाद का जो एरिया है, व्हाट वाज द एरिया? कुमाऊं हिल्स के नॉर्थ में, कुमाऊं हिल्स से और गैंजेस तक, जो गंगा साउथ में अगर लिया जाए, इसके बीच का जो पोर्शन है, दिस वाज टेकन अप बाय द रोहिलास. ओके. These Rohillas were the these Afghani people who fell out of the Afghani migration. Okay. Now, रोहिलखंड किसने सेटअप करा था? Who did this setup? Who did the setup of रोहिलखंड? It was Ali Muhammad Khan. It was Ali Muhammad Khan who set up this state of रोहिलखंड. Okay. Now, Farruखाबाद किसने सेटअप करा? The city of Farruखाबाद was set up by Muhammad Khan Bangash. I'm so sorry, it was not Bangash, it's Bangash. Okay. तो by Muhammad Khan Bangash, the city of Farruखाबाद was set up. एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं जो अभी हमने सामने पढ़ी हैं, फिर हम पीछे जाएंगे. ओके. कौन कौन सी थी? वी केम टू नो दैट देवर न्यू स्टेट्स वर सेटिंग अप. एंड व्हाट वर द न्यू स्टेट्स? ये न्यू स्टेट्स कौन सी थी, किसके अंडर आई थी? नंबर 1, हैदराबाद. हैदराबाद came under Chinkiz Khan, Nizamul Mulk, Asaf Jah. Then the state of Awadh, that was Sadat Khan, Barhanul Mulk. Okay, second one. Then comes the third one, that is Bengal. Bengal हमारी मुर्शिद कुली खान के अंडर आई थी. Then came the Rajputs and Jaipur under the Jai Singh. Mysore, Hyder Ali. Okay. Then
जट्स किसके अंडर आए थे? जट्स एंड भरतपुर, चुरामान एंड बदन सिंह, दिस वाज भरतपुर. देन द सिख came under the Ranjit Singh, Marathas under the Peshwas, okay, and Rohilkhand was Ali Muhammad Khan. Ali Muhammad Khan ने Rohilkhand set up करा, and then Farrukhabad was set up by Muhammad Khan Bangash. Okay, so guys, you got it. ये तो एक्चुअली गॉट इट वाली कोई चीज नहीं है. यू विल हैव टू लर्न दिस एनीवेज ना. जस्ट द थिंग इज यू नीड टू नो. When you read different books, you get to know different more things. But the thing is, we do not have to know the story. Now, we need to know the story, but not because we have to just know everything about it. We just need to know what is required in the exam. Okay. ठीक है. अब तक हमने जो पढ़ लिया, and again, thanks. Your comments, I can see it. It's very nice to see that you guys are understanding. And thank you so much, guys. आप मुझे thanks मत कहो. Let me thank you for being good viewers. Okay. Now we come to the socio-economic conditions. अब हम अपने इस पार्ट में आते हैं कि उस टाइम की socio-economic conditions कैसी थी. What were अच्छा guys, if you are late, you can see this video on YouTube. Okay, you can search for UPSC guide there and then go through these videos. There are many videos, I think related to polity also, then modern history, and I think we'll be coming up with more videos, more sessions. So you can always see there. Don't worry if you are late or something, you join late. Now, the socio-economic conditions at that time, at the time of Mughal Empire, not exactly Mughal Empire, the late Mughal Empire. Okay, we are talking about the late Mughal Empire, when it was going down, when it was declining. So while it was declining, what were the socio-economic conditions? Okay, the socio-economic conditions में अब बहुत सारी चीजें आती हैं. Number one, okay, it's good with no comments, more peaceful and less distracted for me. So I'm turning off the comments. I'll turn it on later. Okay. Now we come to socio-economic conditions. अब हम socio-economic conditions पे आते हैं जो उस टाइम पे late Mughals के टाइम पे थी. Now, the first one was agriculture. How was the agriculture? When we talk about agriculture, हमारे इंडिया में agriculture has been a very like old thing. It has been very important because लोगों का main जरिया of earning and eating was agriculture. Mainly, it was mainly behind the main economic conditions was the agriculture, and it was very important. But at the time of late Mughals, it was technically backward. Okay, it was technically backward, and the peasants were forced to pay a lot of money. They were forced to pay a lot of taxes. Why they were forced to pay a lot of taxes? To maintain the army, to maintain the life of rulers, the life of emperors. तो हो क्या रहा था? They were not investing anything to these peasants. They were not investing anything to these peasants, into these peasants and the agriculture, but उन्हें taxes उतने ही चाहिए थे. तो इससे ना peasants की condition low जा रही थी. It was getting backward day by day. Okay, and this went too backward. ये और ज़्यादा खराब हो गई when the Britishers came. Britishers के time पे agriculture went more down because the people were exploited. The money was exploited. The agriculture was exploited, and the skills and everything, the labor was exploited, overexploited. Okay. Now, agriculture, we have read. Now, the second was, what about the trade and industry? Okay, what about the trade and industry? Now, in trade and industry, at that time, at the time of late Mughals, the exports were much more than the imports. Okay.
द एक्सपोर्ट्स वर मच मोर देन द इम्पोर्ट्स. हमारे इंडिया में काफी चीजें थी. इंडिया वॉज लाइक अ बेसिक इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ कंट्री. इट वॉज लाइक प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग. हर चीज यहाँ खुद लोग मेहनत से प्रोड्यूस कर रहे थे. दे वर प्रोड्यूसिंग थिंग्स एंड दे यूज टू एक्सपोर्ट अ लॉट. Okay, many things were going out. We used to get a lot of money. India was rich in that case. Okay, it was rich in the case of exports. Imports कम थे और exports ज्यादा थे. It was self-sufficient. Self-sufficient क्यों? Because of its diversity. You can still see India has everything. It has the hills, it has the water, and then it has the rivers, it has plains and everything. So with this great quality and with this great diversity comes self-sufficiency. ओके, सेल्फ सफिशिएंट थे इंडियंस काफी ज्यादा. इंपोर्ट्स कहाँ से होते थे? कुछ जगहों के नाम इसमें दिए हैं. यू शुड रीड स्पेक्ट्रम फॉर दैट डिटेल्स. एंड इंपोर्ट्स कहाँ कहाँ से होते थे? पर्शियन गल्फ से होते थे, अरेबिया से होते थे, चाइना से होते थे, तिब्बत से होते थे, एंड देन अफ्रीका से होते थे, एंड यूरोप से होते थे. ओके, नाउ एक्सपोर्ट्स काफी जगहों पे हमारे यहाँ के जाते थे बिकॉज वी वर सेल्फ सफिशिएंट. वी वर एबल टू प्रोड्यूस फॉर आवर नीड्स, सो द एक्स्ट्रा वाज एक्सपोर्टेड. ओके, now guys, the textile industry was also very very strong. As we all know, काफी textiles यहाँ पे already the emperors, the rulers that have been in India, they were so much into wearing good clothes and these robes and everything. So the textile industry was very strong. Okay, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी थी. वन थिंग वी ऑल नीड टू नो दैट द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री वॉज देयर इन इंडिया. इट वॉज प्रेजेंट इन इंडिया एंड इट वॉज प्रेजेंट इन विच लोकेशंस? इट वॉज प्रेजेंट इन महाराष्ट्र, आंध्रा एंड बंगाल. ओके, द शिप बिल्डिंग रीजन जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री थी वो कौन से रीजन में थी? इट वॉज इन महाराष्ट्र, आंध्रा एंड बंगाल. नाउ वी कम टू एजुकेशन. एजुकेशन का क्या था? एजुकेशन वॉज बेसिकली कन्फाइंड. अच्छा, मैं एक बार फिर से एक बार रिवाइज करूंगी ना, तो मैं एक बार हिंदी में भी बोलूंगी. राइट नाउ यू लिसन. ओके, so what about the education? Education was basically confined to literature. It was related to religion, philosophies, laws and ancient learning. हमारे इंडिया में उसको बहुत ज्यादा तवज्जो दिया गया है. जो हमारी फिलोसफीज रही हैं, जो हमारे लॉज रहे हैं, जो लिटरेचर रही है, that is given very much important. That was given very much importance. So the education was mainly confined. Education basically सबसे ज्यादा किस फील्ड में थी? It was in the fields of philosophies and literatures and laws and the ancient learning. Okay, अब हम आते हैं कुछ बाकी कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा फेमस थी. लाइक संस्कृत लर्निंग. संस्कृत लर्निंग वॉज वेरी मच famous. Sanskrit learning, where it was done in Kashi. Kashi is Varanasi and तिरहुट, दैट इज मिथिला. उसके बाद नादिया, उत्काला, ये कुछ रीजन्स हैं जहां पे संस्कृत लर्निंग के लिए लोग जाया करते थे. उर्दू की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी. उर्दू की इंपॉर्टेंस जो थी वो आप उर्दू लोग सीखते थे. इट वॉज नॉट जस्ट लाइक हिंदू संस्कृत सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं था. पीपल वर इन टू नोइंग मेनी लैंग्वेजेस एंड लर्निंग न्यू थिंग्स. तो उर्दू वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इट वॉज टॉट इन मदरसाज. वहां पे पर्शियन और अरेबिक भी सिखाई जाती थी. पर्शियन और अरेबिक भी सिखाई जा रही थी. और इसका मेन सेंटर था अजीमाबाद, दैट इज इन पटना. अजीमाबाद में अरेबिक और पर्शियन का काफी गो था. ओके, नाउ वी कम टू सोसाइटी. सोसाइटी के बारे में क्या था? सोसाइटी वॉज at that time it was made up of too many castes, too many religions, too many creeds and too many sects. Okay, it was divided. The society was divided into too many classes, castes, sects, religion and everything. Okay, so the society, they were tribal people, they were different languages, अलग अलग languages थी, अलग अलग tribes थी, अलग अलग caste थी. उसके बाद आपके religions थे. and then what was there कि एक एक कास्ट के अंदर सब कास्ट बहुत सारी थी. there were too many sub caste under each and every under each and every caste. Okay, so society were made up of too many castes and sects and religions
and subcaste and whatnot. So these all were not divided actually, but there were too many. Okay, I think they were all together and they used to work together. They were happy. This happened after like Britishers came. The division happened after the Britishers came. Earlier, they were too much tolerant towards each other. The people were tolerant. Now, then women. We come to know about the women. The women, according to this society, the women का जो situation थी, the women situation was too much outdated and there were too many exploitative social cultures. Exploitative social cultures का मतलब जो कि हम जानते हैं, सती थी, widow remarriage नहीं हो सकती थी, there was no widow remarriage, there was sati system, and there was so many parda system, there were so many other systems that were exploiting the social cultures, were exploiting the women. Okay, जो high caste women थी, they used to stay at home. जो कि lower caste जो women थी, they used to go out and work at the farms and everything. Okay. So हर तरह के से एक तरह से women की condition was not that good. Okay, it was the people were not that much educated and they were not much into knowing new things. वो पुराने cultures के हिसाब से ही चल रहे थे. Slavery was predominant. There were slaves. There was a prevalence of slaves. Okay, we need to know that there was a prevalence of slaves. Now let me on the comments and just see. Okay, got it, guys? Getting it? As we are coming to end, I think hope you guys are liking it and getting it. So guys, we are coming to an end now. So tell me if you got it, what all I just said and spoke and read. Okay. Thanks. Now, the last thing, the last thing we are going to read is art, architecture, and culture at that time. Art, architecture, and culture at that time. Okay. Art and architecture culture का क्या है कि art and architecture was good because why it was good? It was good because Mughals invited talented people. The emperors, the Mughal emperors, the rulers were too much into art and praising art and they were into it. As we know, Muhammad Shah के बारे में हमने पढ़ा भी. We read about Muhammad Shah that he was known as Rangila because he was into too many dances. He liked classical dance and he liked everything, music and everything. So this was at a very good stage. The art and architecture and culture was at a very good stage at that time. The Mughals liked it. The Mughal emperors invited talented people. They gave praise to talented people. Okay. ठीक है. Now, Lucknow में there was Asaf-ud-Daula who built this Bada Imambara in 1784 and Savai Jai Singh built this pink city, beautiful city of Jaipur, and there were astronomical observatories that were set up in Delhi, Jaipur, Banaras, Mathura and Ujjain. Okay, and this astronomical table set करी थी. This was Jij Muhammad Shahi, okay, by Jai Singh. Then South में architecture and mural paintings का काफी go था. Then पेंटिंग स्कूल्स जो दो इसमें एक्सप्लेन नहीं है बट बताए गए हैं, दैट वाज राजपुताना एंड कांगड़ा पेंटिंग स्कूल्स. दे वर इम्पोर्टेंट. एंड देन देर वाज अ ग्रोथ ऑफ उर्दू लैंग्वेज. देर वर लॉट्स ऑफ पोएट्स कमिंग अप. पोएट्स के नाम भी हैं, मिर, सौदा, नजीर, मिर्जा गालिब, ये सब है. देन मलयालम लिटरेचर वाज कमिंग अप. कंचन नाम्बियार ने एक मलयालम पोएट थे, उन्होंने काफी सारी पोएम्स लिखी. ठीक है, मलयालम लिटरेचर वाज कमिंग अप. देन द तमिल लिटरेचर वाज कमिंग अप. ठीक है, इट वाज enhanced by the सितार पोएट्री. ओके, तमिल लिटरेचर.
देन हीर रांझा पंजाबी में लिखा गया था. इट हैज बीन वेरी गुड लाइक कलेक्शन. देन सिंधी में रिजालो, कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय शाह अब्दुल लतीफ लिखा गया. ठीक है, ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पोर्शन दिया गया है 4th चैप्टर में. और विद दिस वी एंड दिस सेशन. हम अब क्या करें? लाइक यू आर आस्किंग अपने रिवीजन के लिए क्यों पढ़ा रहे हो आप? मैं क्या करूं? मुझे कहा गया था तो मैं पढ़ा रही हूँ. इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो डू दैट. ओके गाइज, सो यू कैन ऑलवेज सी दिस वीडियो ऑन यूट्यूब. वहां पे ही आपको लिंक मिल जाएगा. लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा फॉर द नोट्स विल बी अपलोडेड. थैंक यू सो मच. दिस वॉज माई लास्ट क्लास फॉर टुडे, दीज 4 chapters. Hope you have good exams, good day, good life, and thank you so much. Thanks.